A cheerful good morning and a very warm welcome to once again science class of standard 5th. I welcome you all on behalf of Sunbeam Academy. Okay, starting with our again today's discussion. Before going ahead with the class, I would like to stay here. I would like to state here that is the situations are under our control as there is fall in the number of COVID cases as per the news headlines of yesterday, of today, or basically the news was of yesterday only. So let us hope for this only, that is there should be a continuous decline in the number of the COVID active COVID cases, that is below 20,000 in Varanasi. Let's hope it becomes below 10,000 or below 1,000 as soon as possible. At the same time, our government has also decided to approve the vaccination of 3 to 4 companies, okay, so that each and everyone at the block level, at the state level, at the national level, more and more number of citizens can be getting vaccinated as soon as possible. Okay, so starting with this, let us have our class today. Let us start with our discussion today. So first and the foremost thing, as you know, that is first we are going to discuss with the syllabus. I am going to tell you that I hope all of you would have got your periodic test 2 syllabus as well. Okay, and we have only 2 chapters, that is your simple machines and air and water. Okay, rest of the chapters will be there in your annual portion. So let us start with this without any delay. This is our syllabus of the annual portion, okay, which we have already started. These 2 chapters, that is your simple machines and air and water, this is going to come in your periodic test 2, which will be held at the end of December or in the first week of January. Starting with this, the sun, the earth and the moon, we have already started. So let us start, or let us continue with the same chapter. Okay, if you remember yesterday we have discussed till here, that is starting from the first page, sun, star, moon, satellites, natural satellites, all these things I have already told you. I also told you how is the sun, what is the different types of reactions which are taking place, okay, inside the sun, which is resulting in the release of so much energy. Fact file, if you remember, this is the gases that react inside the sun to release energy are expected to last for about another 5 billion years. That is why we are going ahead with more and more cases or more and more inventions, technologies related to your solar energy. We also discussed why this only Earth is considered to be a planet for the survival, by having different kinds of requirements like water, atmosphere, soil, right amount of temperature, and at the same time the gravitational force. The structure of the earth, we also discussed about the different layers, that is your crust, mantle and core. Starting with this, the checkpoint, we are going to do it today. If you remember, the diameter of the sun is about how many times? 11 times, I hope. Let us see. Right, sorry, 110 times. The diameter of the sun is about 110 times the diameter of the earth here. Okay, so here it will be 110. Then energy from the sun is called the solar energy. Okay, nearly 3/4 of the earth's surface is covered with water. The layer between the core and the crust of the earth is called the mantle. That is this layer we are talking about, between crust and the core. We have only one layer, that is your mantle. Next we have the inner core is made mostly of iron. Okay, if you remember. Okay, the outer part, okay, the inner core is like, the outer part of the core is basically made up of molten iron and nickel. Okay. Okay, so today we are going to start with this moon, which is a natural satellite which keeps on revolving around the earth here. Okay, let us go ahead and let us try to complete this moon if possible. Okay, after that we have the eclipses, and that's it, natural satellites.
So when we are talking about the moon here, so the moon is the Earth's closest neighbor and is the only natural satellite. If you remember, I have already told you regarding this, that is why it is considered to be a natural satellite, okay, and what is the difference between a satellite and a artificial and natural satellites. A satellite is an object that moves around a larger object such as a planet, okay. So here also I have told you this thing, that is it is an object which is moving around a larger object such as a planet. The moon is about 1/4 the size of the Earth, and the moon is about 4.5 billion years old, okay. I don't think life existed at that much time, okay, or even if the life was present, that would be present in the form of microorganisms only, okay. So the moon size is 1/4 the size of the Earth, okay. Next we have here, it is, that is, why does the moon shine? The moon does not have any light of its own. It only reflects the sunlight that falls on its surface. Therefore moonlight is nothing but the reflected sunlight, okay. So यहाँ पे याद रखिएगा आप लोग कि मून की जो भी एनर्जी रहती है, सॉरी, जो भी लाइट मून से हम लोग को दिखाई देता है कि मून से आ रहा है, that is not actually the light which is coming from the moon. It is the reflected light which comes from the moon here, okay. अब यहाँ पे एक वर्ड है reflected, okay. इसका बहुत ही मतलब broader term है. It is not a simple term. When we are talking about the reflection, okay, so reflect मतलब वापस होता है basically, okay. And this reflection can be used in many terms here. It can be used in many concepts as well, okay. Like when we are talking about the reflection of light, तो आप देखते हो कि जैसे मैं आपको बस इतना थोड़ा सा बताऊंगा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है क्या, ओके. जैसे आप लोग मुझे देख पा रहे हो, ठीक है. सो या फिर आप अपने घर में, जैसे ये नेचुरल सिचुएशन में रह करके ज़्यादा अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन कर पाता, बट स्टिल I'm just trying to explain you with the common day-to-day life examples. Like you are sitting in front of your mobile phones or laptops, okay, or even desktop as well. So you would be able to observe all these three things just because of these lights, okay. Now all of you know the light which is there either in your room coming from the sunlight through your window, doors or anything like that, or the light which is present there as the tube light, bulbs, CFLs, LED or whatever it is, okay. So what happens, that is basically the source of the light, okay. So whether the light is coming from the sunlight or any of the light source which is present in your room, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आप चीज़ों को देख पाते हो, okay. So सबसे पहले क्या होता है, लाइट कहीं से भी आए, okay, वो लाइट आकर के उस ऑब्जेक्ट पे फॉल करती है, ठीक है, जिसको आप देख रहे हो. मतलब अगर आप लैपटॉप है आपके सामने, तो सबसे पहले लाइट लैपटॉप पे पड़ता है, ठीक है, फिर लैपटॉप से रिफ्लेक्ट होकर के आपकी आंखों में आता है, एंड दैट इज व्हाई यू आर एबल टू सी द लैपटॉप, ओके. इन द सेम वे द पर्सन और द स्टूडेंट्स हु आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द मोबाइल फोन्स, ओके. तो आप मोबाइल फोन इसीलिए देख पा रहे हो या सेल फोन्स इसीलिए देख पा रहे हो बिकॉज लाइट इज फॉलिंग ऑन इट, getting reflected and going into your eyes, and that is why you are able to observe it that yes, it is a cell phone or a laptop or a desktop. The same concept goes for any of the students, blackboards, teachers, your parents or anything like that. आप जिस भी चीज को देख रहे हो उसके ऊपर कोई ना कोई लाइट फॉल कर रही है, फॉल करके रिफ्लेक्ट हो रही है और आपकी आंखों में जा रही है. दैट इज व्हाई यू आर एबल टू सी दिस थिंग, ओके. सो लाइट फॉल करना, फिर उसके बाद उससे टकरा करके वापस आना, सो बेसिकली दिस इज नोन एज योर रिफ्लेक्शन. और बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है रिफ्लेक्शन का. आई एम जस्ट राइटिंग एंड टेलिंग यू हियर. Okay, when we are talking about reflection here, okay, so reflection का जो definition है, this is the simplest definition of it, that is bouncing back of light from a surface, that is known as your reflection. Okay, bouncing back of light from a surface is known as a reflection. अगर मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं, लिटिल बिट कंसेप्ट,
So let us take any object here. ठीक है, आप यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं. Suppose just take it. Let us take the cylinder only. Okay. Okay, this is a cylinder. Okay, suppose, and two people are there, represented by, suppose this is you, okay, this is you. Now what happens is, that is how you are able to see this cylinder. Now I am going to tell you. So the very first thing is that light is coming from everywhere, either from the sunlight or from anywhere else, or let me make the sun as well. Not this one, let us have a circle. Okay. So this is basically your sun. This is sun. This is the object basically, or basically you can call it to be cylinder as well, no problem. So this cylinder is nothing but your object, or you can call it to be a box as well if you are not able to understand then. Okay, and this is the person who is observing it. Person, okay, or observer. Okay, so these two things are there. Now all the things are ready. Now the concept of reflection of light. So the very first thing, that is, just now I told you that this is the object which you are able to see with your eyes. How? So the very first thing is that, let me see, the screen has been shared. Oh, I'm sorry for this. I'm really sorry, the screen was not shared. Now I'm sharing you the same things. First let me show you what we have discussed here. Okay, so basically what we have discussed here is the moon, that is, which is the Earth's closest neighbor and its only natural satellite. Okay, and why does the moon shine? Okay, because the moon does not have any light of its own. It is reflecting the sunlight. That is why we are able to see it. Now how this reflection is taking place, see here. This is the cylindrical object which we are going to observe it. This is the person or you who is observing it, and this is the sun which is giving out the light. So the very first thing is that light will come and strike over this cylinder. यहाँ पे आकर के टकराएगी. Okay, from here it will get reflected back and it will enter into your eyes here. Okay, so in this way you are able to see the object. So this is known as reflection of light, that is bouncing back of light. यहाँ पे light पड़ी और फिर वो bounce कर गई, मतलब वहाँ से reflect हो गई. Okay, so if you keep any other object in place of this, the same concept lies, that is, light will come and fall on that object, and after that it will go or get reflected back into your eyes, and this is the reason why you will be able to observe it. Okay, now what we are going to see here is, that is the next part, when we are talking about the surface of the moon here. Okay, so the surface of the moon is very dry and uneven, if you can see here. Okay, the image most probably collected by the satellites only, which has been successfully launched on the moon. Okay, it has mountains, deep valleys, plains and craters. When we are talking about the craters, I hope crater is the bowl shaped hole which is present on the land. That is, the holes which are present in the form of a bowl, that is known as your crater.
दैट इज बेसिकली कहने का मतलब यही है कि जो सरफेस ऑफ द मून है वो बहुत ही ड्राई है, सूखा है, गीला नहीं है और अनइवन है, मतलब स्मूथ नहीं है, बराबर नहीं है। एंड एट द सेम टाइम इट इज फुल ऑफ माउंटेन्स, डीप वैलीज, plains and craters are nothing but the holes which are present in the shape of a bowl. Okay, bowl, katori, okay, any container. Most of the craters on the moon were formed when meteors struck it millions of years ago. Now what are these meteors? Okay, meteors or meteorites, these are the big rocks which keep on falling from the space, and unfortunately when they, instead of falling anywhere else, when they fall or strike on the surface of the moon, they create a very big hole here, okay, resulting into the formation of a crater. Okay, the gravity on the moon is 6 times less than the gravity on the earth. Therefore a person weighing 60 kg on the earth will weigh only 10 kg on the moon. ठीक है, ग्रेविटी अगर आपको याद हो तो कल ही मैंने आप लोग को बताया था ग्रेविटेशनल कंसेप्ट क्या है। ठीक है, कि एक ऐसा फोर्स जो आप सभी लोगों को अर्थ के सरफेस के तरफ खींच करके रखता है। ओके, सो द ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज देयर ऑन द मून इज 6 टाइम्स लेस, मतलब 6 गुना कम है, ठीक है, एज कंपेयर टू द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ हियर। ओके, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो लोग भी वहाँ पे जाते हैं, तो जैसे अगर किसी का वेट यहाँ पे 60 kg है, ठीक है, तो मून पे उसका वेट 10 kg होगा, मतलब 6 टाइम्स वो रिड्यूस हो जाएगा। ओके, और आप उल्टा भी समझ सकते हो कि जैसे किसी का वेट अगर 20 kg है मून पे, तो उसका 6 टाइम्स, मतलब 20 इंटू 6 120 kg उसका वेट होगा ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब देखिए यहाँ पे याद रखिएगा, वी आर टॉकिंग अबाउट वेइंग। ओके, वेट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, सो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद दिस। ओके, मूविंग अहेड विद दिस, वी हैव द फेजेस ऑफ द मून। ओके, ये हैं बेसिकली फेजेस, मैंने जो आपको बताया था, ये एक कंप्लीट साइकिल है जो कंटिन्यूसली चलती रहती है, ठीक है, और इसी के वजह से पूरा का पूरा महीना इसी में बीत जाता है। दैट इज वन एंटायर मंथ इज बीइंग टेकन बाय दिस मून टू हैव कंप्लीट दीज फेजेस। लाइक स्टार्टिंग विथ एनीवेयर, आप कहीं से भी स्टार्ट कर लो, जैसे फुल मून से हम लोग शुरुआत करते हैं या न्यू मून से शुरुआत करते हैं। ओके, इन बोथ द केसेस आप कहीं से भी शुरू करिए, आपको आना वहीं पे है। सो फुल मून इज पूर्णिमा, आई होप, जब आपको पूरा का पूरा मून दिखाई देता है। Okay, then it gets converted into waning gibbous. Okay, waning gibbous basically means what? That is when slowly and slowly you are able to see only little bit portion of the moon, और वो उसका साइज धीरे धीरे क्या होता है, कम होने लगता है। Okay, that is basically known as your gibbous। यहाँ पे waning gibbous दिया है, साइंस की बुक्स में आपको खाली gibbous मिलेगा। Okay, next we have, followed by this, we have the half moon, that is you will be only able to observe half of the moon, okay, not the full moon or the waning gibbous. Then again we have the waning crescent. Okay, gibbous means पूरे majority दिखाई देगी, majority portion of the moon आपको दिखेगा, बहुत थोड़ा सा portion नहीं दिखेगा। Whereas in the case of crescent, that is waning crescent, only little bit portion of the moon will be visible, but majority of the portion hidden रहेगा। Okay, then we have the new moon, in which you will not be able to see, or you will be able to see only a little bit of thin thread like structures in an eclipse way, or that is you can also call it to be semicircular way। ठीक है, जैसे आप लोग क्राउन पहनते हैं, ठीक है, a little bit shape of the hair band, just like that। Then we have again the waxing crescent। ओके, दैट इज अगेन जस्ट अपोजिट ऑफ दिस। जैसा आपका साइकिल यहाँ तक चला था, यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिख रहा था, ओके, यहाँ पे थोड़ा सा ही दिखेगा, बट ऑन द अपोजिट साइड ऑफ दैट मून। ओके, नेक्स्ट यू हैव द हाफ मून अगेन कमिंग बैक। देन अगेन वैक्सिंग गिबस। वैक्सिंग गिबस देखिए, वैनिंग इधर पूरा रहेगा, फिर इधर वैक्सिंग, हाफ ऑफ द मून
okay, will be waxing, half will be waning. Waning gibbous, waning crescent, then we have waxing crescent and waxing gibbous. Okay, just opposite. Okay, सेम रहेगा, मेजॉरिटी ऑफ द मून आपको दिखाई देगा, बट द अदर पार्ट ऑफ द मून, दैट इज द पार्ट विच इज फेसिंग टुवर्ड्स द सन. ओके, this again you'll be able to get or have a look over the full moon. All right, let us have, okay, let us have the reading and let us try to see whether it is the same or something else here. Okay, the moon revolves around the earth. It completes one revolution around the earth in 27.3 days. That is approximately 1 month. That is 2 or 3 days left. That's it. Okay, तो कहने का मतलब यही है कि अर्थ के चारों ओर मून रिवॉल्व करता है, घूमता है, और उसके पूरा एक रेवोल्यूशन करने में या उसको पूरा एक चक्कर लगाने में 27.3 डेज लगते हैं. ओके, द मून ऑल्सो रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस लाइक अ स्लोली स्पिनिंग टॉप. ओके, जैसे मैंने आपको बताया था कि रोटेशन एंड रेवोल्यूशन, बोथ द कंसेप्ट्स हैज टू बी क्लियर इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दीज टर्म्स, in order to understand about the planets. Okay, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि अर्थ क्या है, घूम तो रहा है, सॉरी, मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, सन के चारों ओर तो घूम ही रहा है, पर वो अपने ऊपर भी घूम रहा है, अपनी एक्सिस पे भी धीरे धीरे घूम रहा है. ओके, okay, it takes about the same time, that is 27.3 days to complete one rotation around its axis. अब देखिए ये रोटेशन काफी धीरे है as compared to other planets. ओके, मतलब उसका रिवोल्यूशन और रोटेशन ऑलमोस्ट सिमिलर है. ठीक है, मतलब वो धीरे धीरे अपने एक्सिस पे भी घूमता रहता है along with the revolution taking place around the earth planet. Okay, that is why same half of the moon always faces the earth. ठीक है, इसीलिए वही आधा मून हमेशा अर्थ को फेस करता रहता है. अब देखिए ये चीज है. ठीक है, यहाँ पे आपने क्या देखा है कि हाफ ऑफ द मून, ठीक है, ये अर्थ है हमारा. ठीक है, वही हाफ जो आपको दिख रहा है, ठीक है, सेम हाफ ऑफ द मून दिखता रहता है. ठीक है, चाहे आप इधर से देखिए चाहे उधर से देखिए. ओके, इट इज ओनली द लाइट विच इज गेटिंग चेंज. In this case, the light is illuminating the right side of the half moon in the upper case, whereas in the lower case, it is illuminating the left half of the moon. ये इसलिए होता है क्योंकि अर्थ भी घूम रहा है. ओके, और जब अर्थ घूमता है तो उसके ऊपर जो सनलाइट पड़ती है, that keeps on getting changed. ओके, अर्थ घूमते घूमते तो उसके डिफरेंट पार्ट्स पे, ठीक है, सनलाइट पड़ती है, as a result of which the moon also gets the reflected light in a different manner. Okay, next we have here, next is, as the moon revolves around the earth, one half of the moon receives the sunlight while the other half remains dark. Because of the difference in the speed of rotation and revolution of the earth and the moon, we do not always see the entire lighted half of the moon. Okay, most of the time we can see only a part of the bright side of the moon. Okay, because of this the moon appears to change shape. The different shapes of the moon as seen from the earth are called the phases of the moon. ठीक है, सबसे पहली चीज कि sorry, whenever we observe the moon, okay, so in both the cases only half of the moon is receiving the sunlight, the other side always remains the dark. मतलब 2D शेप में ही हम खाली इसको देख पाते हैं, 3D शेप में नहीं देख सकते. क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा इल्यूमिनेटेड ही नहीं होता. जितना लाइट जहां तक पड़ेगी उतना ही हमें दिखाई देता है, बाकी सारा पोर्शन हिडन रहता है. ओके, डार्क रहता है, नहीं दिखाई देता. इन द सेम वे व्हेन वी ग्रो हियर, ओके, दैट इज because of the differences in the speed of rotation and revolution. अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये मून है, ये भी अपना क्या कर रहा है, रोटेशन भी कर रहा है, रेवोल्यूशन भी कर रहा है. सन भी क्या कर रहा है, रोटेशन भी कर रहा है और रेवोल्यूशन भी कर रहा है, दोनों चीजें कर रहा है. सो बोथ ऑफ देम दे आर डूइंग रोटेशन एज वेल एज रेवोल्यूशन. मून अर्थ के किनारे किनारे घूम रहा है,
अर्थ सन के किनारे किनारे घूम रहा है. ओके, सो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस the differences in the speed of rotation and revolution, okay, we are only able to see the illuminated portion of the moon. मतलब मून का जो भी illuminated portion रहता है जिस पे लाइट ज़्यादा पड़ती है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई देता है, ओके, हम खाली वही पोर्शन देख पाते हैं, बाकी सारा पोर्शन हमें दिखाई नहीं देता है. ओके, और इसी वजह से मून अपने डिफरेंट फेजेस को शो कर पाता है. मतलब ये अलग अलग शेप्स जो हमें दिखाई देते हैं मून के, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द डिफरेंशियल लाइट रिसीव्ड बाय द मून. नेक्स्ट वे वी हैव हियर इज द फेज ऑफ द मून इन विच द एंटायर साइड ऑफ द मून फेसिंग द अर्थ गेट सनलाइट इज कॉल्ड द फुल मून. अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये फुल मून है. ठीक है, अगर हमें, ठीक है, यहाँ पे अगर ये देखिए ये मून, ओके, सपोज दिस इज द सिचुएशन, ये सन की लाइट जब भी पड़ रही है, ओके, तो आप क्या देख रहे हो कि मून के खाली इसी पोर्शन पे पड़ रही है, पीछे वाला मून का पोर्शन डार्क है. ठीक है, तो इसीलिए ये हमें फुल मून दिखाई देता है. लेकिन ये तो इक्लिप्स के एग्जाम्पल था. यहाँ पे भी आप समझने की कोशिश करिए कि जब सनलाइट डायरेक्टली फॉल करती है रिफ्लेक्ट होकर के, ठीक है, मून के ऊपर, और ये पूरा का पूरा मून इल्यूमिनेटेड हो जाता है, दैट इज व्हेन द मून इज प्रेजेंट जस्ट इन फ्रंट ऑफ द अर्थ, ओके, एंड रिसीव्स मैक्सिमम सनलाइट. सो दैट स्टेज और दैट फेज ऑफ द मून इज नोन एज फुल मून. ओके, after 3 to 4 days we can see a portion of the moon which is slightly smaller than the size of a full moon. Okay, now see, okay, after 3 to 4 days, that is from here to here, it takes around 3 to 4 days, and after that we are able to see a little bit smaller portion of that full moon which is known as your gibbous. This is called the gibbous moon. Okay, after a week from seeing the full moon we see half of the moon. This is the half moon phase, that is यहाँ से यहाँ आने में approximately 1 week. Okay, then after 3 to 4 days or 11th to 12 days after the moon, ठीक है, 2 केसेस हैं यहाँ पे देखिए, या तो 3 से 4 दिन के बाद और 11 to 12 डेज आफ्टर द फुल मून. मतलब यहाँ से अगर आप देखेंगे, ओके, तो 3 to 4 डेज, और यहाँ से देखेंगे तो 11 to 12 डेज, यू विल सी द बो शेप्ड कर्व्ड मून. ओके, बो शेप्ड मीन्स धनुष के आकार का आपको दिखाई देगा. ओके, दिस इज नोन एज योर क्रीसेंट मून. ओके, thereafter 2 to 3 days और 14 to 15 days, that is यहाँ से देखेंगे तो क्रीसेंट से न्यू मून में 2 to 3 days, या यहाँ से यहाँ देखेंगे तो approximately 14 to 15 days after the full moon we cannot see the moon at all. This phase of the moon in which side facing the earth gets no sunlight, this is called the new moon. Okay, after the new moon phase the bright portion of the moon increases, we again see the full moon after 14 to 15 days. मतलब ये same process repeat होता है, and again after 14 to 15 days we are able to see here. Okay, moving ahead with this, when the size of the bright part of the moon appears to grow, it is called waxing moon. ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको दिखाई देगा जब ये ब्राइट पार्ट यहाँ से इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, यहाँ पे देखिए एकदम मिनिमम था, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, एंड मैक्सिमम. सो दिस इज नोन एज योर वैक्सिंग मून. ओके, एंड व्हेन द साइज अपीयर्स टू डिक्रीज इट इज कॉल्ड एज वैनिंग मून. देखिए फुल मून थोड़ा सा कम हुआ, आधा कम हो गया, आधे से ज़्यादा कम हो गया, पूरा कम हो गया. ओके, सो दिस इज नोन एज योर वैनिंग मून. द टाइम टेकन फ्रॉम वन न्यू मून to the next
ओके, न्यू मून की बात कर रहा है, देखिए तो यहां से लेकर के वापस यही न्यू मून तक, ओके, इज कॉल्ड अ लूनर मंथ, एंड अ लूनर मंथ इज अबाउट 29 days and lunar is relating to the moon here. तो मून, न्यू मून जब यहाँ से लेकर के पूरी अपनी साइकिल करके वापस न्यू मून का फॉर्मेशन होता है, तो इट टेक्स अबाउट 29 days. All right. So I hope this much is clear to all of you. Okay, and this was all for today. Okay. Again and again, the homework remains the same. That is, please have a thorough reading of the chapter because this is going to help you a lot. And at the same time, please try to underline the hard words or the sentences so that it becomes easier for you to understand it. Okay, so this was all for today. Please do not forget to take all the necessary precautions, and at the same time, please have a thorough reading of the chapter. So this was all for today. Thanks a lot for being with me and have a superb day ahead. Thank you.